इसके अंदर ही आएगा, राइट और रॉन्ग, ठीक है। दैट्स वाई उसको हमको कवर करना चाहिए। ओके, तो कभी आपका पाला कभी इससे भी पढ़ सकता है, दैट्स वाई हम लोगों ने उसकी कैलकुलेशन को भी कवर करा था, राइट, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं चीज़ देखूँ कि मेरे पास एक कंपोनेंट अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहले तो कंपोनेंट, जब भी आपके पास कोई कंपोनेंट आता है तो उस कंपोनेंट का एप्लीकेशन जानना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंपोनेंट? दिस कंपोनेंट इज नोन एज कैप बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? कैप बॉडी। दिस कंपोनेंट इज नोन एज कैप बॉडी। ओके, बेसिकली बाइक चलाते हो भैया आप, बाइक की टंकी होती है, पेट्रोल की टंकी, तो पेट्रोल की टंकी का ये पार्ट है बेसिकली। तो ये वाला जो आपको सेक्शन दिख रहा है ना, ये सेक्शन, यहाँ पर एक होल होता है लाइक दिस, एक होल होता है विच इन ड्राफ्ट, लेकिन मैंने इसको अभी हटा दिया इस होल को, क्योंकि फिर उसमें हमको स्लाइडर लगेगा, राइट। स्लाइडर इसमें लगा था लेकिन मैंने इसको हटा दिया है फॉर द कॉपीराइट इशू, को भी कॉपीराइट ना आ जाए इसके ऊपर, दैट्स वाई, राइट। और यहाँ से कुछ फीचर और भी होते हैं, कुछ और भी फीचर होते हैं फॉर द लॉकिंग पर्पज, तो वो चीज़ों को भी मैंने यहाँ से हटा दिया है, राइट। तो बेसिकली हम लोगों को HPDC मोल्ड को समझना है, तो उसके लिए कंपोनेंट के फीचर की जरूरत नहीं है, राइट। ओके, तो आज हम लोग उसका डिजाइन पोर्शन देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? उसका डिजाइन पोर्शन देखेंगे। टुडे वी विल सी अबाउट द कंप्लीट डिजाइन पोर्शन ऑफ दिस HPDC कंपोनेंट। ओके ओके, इसका जो मटेरियल है, नोट डाउन करना कुछ चीजें, इसका जो मटेरियल है वो है ADC12। क्या है? ADC12। ओके, वाई ADC12? 383 भी बोलते हैं इसको ना, 383 भी बोला जाता है इसको। टेल मी व्हाई दिस कंपोनेंट मटेरियल इज ADC12। व्हाट इज द मटेरियल नेम? ADC12। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ADC हियर? If I am telling you what is the meaning of ADC here, tell me, anyone? What is the meaning of ADC? ADC means aluminium die casting, right? If I am asking you about the density, अच्छा, what is the density for the aluminium? Tell me. Don't forget the property of material, which is very important. Okay, 2.70 gram per centimeter cube. अच्छा, tell me what is the density for the PP? Again, we have covered all the mold regarding the PP component, right? What is the density for the PP? Tell me. 0.90 gram per centimeter cube. Yeah, very good. Okay, and density for the aluminium 2.70. 2.70। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई किसी की भी मटेरियल की डेंसिटी आप याद रखो, ठीक है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो सी हियर, तो इसके लिए हमको एक सिंगल कैविटी मोल्ड बनाना है विच विल बी द HPDC मोल्ड, ठीक है। अगर इस कंपोनेंट की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंपोनेंट, तो इस कंपोनेंट के अंदर क्या क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द पार्ट, दिस इज द पार्ट। इसके अंदर और क्या आएगा? ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, अ कंप्लीट पार्ट, रनर, ओके ओके, गेट रनर, and gate also, gate for the property gating, we should take gate also, right, ठीक है। इसके कुछ और भी पार्ट्स हैं, right। So first of all we have to create a core and cavity for this, right, we have to create core and cavity, ठीक है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कैलकुलेट प्रोजेक्टेड एरिया, right or wrong? Projected area for the selection of machine. First of all, this thing, okay, calculate projected area of this component for the selection of machine, okay, for the selection of machine, okay. Depending upon that machine, we have to select the plunger diameter also, plunger diameter, right or wrong, understood or not? Plunger diameter, depending upon that plunger inner diameter or the complete diameter of the plunger, we have to decide the biscuit diameter, which is the waste material, which will be which is the part of the runner system, right or wrong?
okay, which is the part of the runner system, right? Now see here, this is the component we have, right? This is the component, okay. और मैं इसका सबसे पहले क्या बनाऊंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रिपेयर a core and cavity. For example, this is nothing but this is the layout for the core and cavity. I am preparing this. This is the core and this is the cavity here. This is the cavity here. Okay, here will be, what is this? Tell me, what is this here? What is this? Sleeve chamber. You can say that sleeve chamber, but it is known as sprue bush. Sprue bush. Okay, sleeve chamber will be connected with this. Sleeve chamber will be connected with this. Inner diameter of the sleeve chamber and the inner diameter of the sleeve will be same. For example, if the inner diameter of the sleeve is about to 30, then it means it will be 30. Right or wrong? Okay, then we have to go for the complete housing. See, this is the housing. This is the housing. Okay, now if I am talking about the top view, this is the top view. Okay, here I have to create one more thing. For example, 1 minute. See, first of all we have to create complete layout into the mind. Okay, for example, we are preparing the HPDC model for any component. Okay, this is nothing but what is this here? Overflow. Achha, okay, tell me what is this? Gate runner. Like this we can prepare like this. Okay, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अलग तरीके से नहीं बना सकते, ठीक है. If you want to feed by the only one gate, you can, but depending upon our suitability and the flow analysis also, right? Okay, now see, this is the main runner, and this is nothing but this is the biscuit. And what will be the biscuit diameter? It will be equal to, किसके बराबर रहेगा? It will be equal to plunger diameter, right or wrong? Plunger diameter. This diameter will be equal to plunger diameter. This is nothing but this is the biscuit. Understood? Understood? Right or wrong? I hope you understood about this. Okay, here this is the plane I have. Okay, here see, I am preparing just a single core and cavity for this, right? See, this is the existing point and here I am taking this. Okay, now for the manufacturing aspect, this is the insert here, right? This is the insert. Okay, now see. Okay, for the manufacturing aspect we should take a distance. Okay, now see, from this point to this point I can take 20 mm, right? I am taking 150 mm from this point to this point, and this is nothing but this is the 210. I can take and click OK. See, okay, I am preparing from the center. Okay, preparing from the center. Okay, this is nothing but this is the sketch for the, this is the sketch for the, tell me. Yeah, this is the sketch for the cavity or the core plate, you can say that, right? 80, I am taking 90 from this point to this point, and this is, I can take 220. Okay, 220. This is nothing but this is the insert. This is the sketch for the insert. Okay, I am creating core and cavity. See here. Again, depending upon the cooling pipe, right or wrong? Again, I am taking the screen will be black. Okay, so it will be easy for the understanding, right? See here. Right, see. Okay, what will be the distance? This is the length here. Okay, what will be the distance? Because this is the core insert, but I have to take core insert distance. Okay, now see, depending upon the wall thickness I can take, for example 8 mm I am taking. How much? 8 mm. Okay, it means plus 15 plus
16 again. So this will be the total from this point to this point. It is around 32, and click OK. See, okay, this is the core part again. Okay, this is the cavity part. Now see, this is the distance, okay, plus 32, and click OK. Control J for Jammu Kashmir. Okay, Control J for the color coding. Now change the color for the, this is nothing but this is the cavity, or this is nothing but this is the core side. Okay, this is the core side. See, right? Understood? Okay, I have prepared just core and cavity plate. Okay, subtract this component from here and click OK, like this, like this. Okay, and this portion will be subtracted from here. See, okay, and click OK, right? See, understood? See, there is a problem here. See, there is a problem here because I am extracting the core and cavity for this component. Okay, तो see carefully here. आपको यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन किसके अंदर आएगा भाई? This portion will be in cavity. See here, this complete portion will be in cavity. See here, right? It means we have to split that portion, right? We have to split that portion. Now split this. Split this core with a new plane. Okay, this will be the plane. This will be the plane, and click OK. See. Okay, hide this portion and hide this portion also. Then it means it will be the part of this. See here. See, understood? This portion will be the part of cavity. Okay, cavity insert, you can say that, right? Now see, hide this portion and unite with this. Unite with this. ओके, अच्छा यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, नजर आ रहा है, कुछ शार्प एजेस नजर आ रही है. यू कैन सी सम शार्प एजेस. For that we have to use EDM, right? Okay, it means this will be the insert. For example, this will be the insert. This portion will be the insert, right? See here. This portion will be the insert. This is the insert again, and this will be the insert. Okay. Okay, this will be the insert again. It will be 3 insert here. 1, 2 and 3. यहाँ पर 3 insert होंगे भाई, right? तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा. We have to separate this insert. We have to separate this insert from this die. So this is nothing but this is the core and cavity right now. We have prepared just core and cavity. Okay, we have prepared just core and cavity. Okay, I'm hiding this portion and this portion. This will be the part of this. Okay, now unite this. This is nothing but this is the core and this is the cavity. Okay, this is the cavity and this is the core here. Okay, now for the alignment purpose we have to prepare some interlock also, because here we are using insert. Okay, that's why we need interlock. Okay, now see the interlock again, like this.
Okay, I can take distance, 1 minute, I can take dimension like this. Okay, I'm taking 30, and this will be the 30 I can take 30. And what will be the minimum draft into this? What will be the minimum draft? Tell me. I can take 20, 25. Okay, tell me. ड्राफ्ट कितना रहेगा इसके अंदर? हाउ मच? 10 to 15 degree we can take, right? So this will be the draft. Okay, for avoiding the misalignment, right? See, this will be the face, and here I can take draft 15 like this. Okay, now I can use edge blend like this. Okay, so 4 mm I can take like this. Okay, okay, mirror this portion. Again mirror both. Right? Okay, and unite with this. This is the interlock, right? Okay, subtract from this side, subtract here from here, right? Okay, and this is the female portion of the interlock. This is the male portion, and this will be the female portion of the interlock. Understood? I hope you understood about this. Okay, now I have to prepare housing also, core and cavity housing, right or wrong? Okay, I have to prepare core and cavity housing. Okay, now see, this will be the sketch for the core and cavity housing. Okay, again from this point to this point I am taking center. Okay, I am taking center, right? Is it clear? Okay, it will be like this again. Okay, I am taking 300 and 300, which is the housing. ठीक है? अच्छा, okay, I have tell you one thing, that there is a distance between this point to this point, right or wrong? Which is nothing but what is this? Sprue or sleeve, you can say that. Okay, अगर मैं नोजल की बात करूं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, प्लास्टिक में बात करूं तो वो सेंटर में रहेगा. In plastic mold it will be in center, but if I am talking about the HPDC, it has some offset about 120 mm, but depending upon the machine we have to see that catalog, right? Right now I am taking 120 mm, right? Right now I am taking 120 mm. Now see here, see, first of all I am creating housing like this. See, this is the distance 75, and I can take 80
95. Okay, now see, this is the housing. Control J. Again, this will be the core housing, right? This will be the core housing. See what is the distance from the 45, and I can take 65 and click OK. Right? I hope you have clear about this. Right? Okay, and cut this portion. How much? $44. Subtract from this and click OK. Again, click this, extrude, subtract from this. How much? 95 minus 65 and subtract from here also. See, so this will be the right. This is the cavity housing. Again, this is the core housing. I hope you understood about this, right? ओके अच्छा, क्या यहां पर मैं फिट कर सकता हूं? कैन आई फिट दिस पोर्शन फेस टू फेस फॉर द मशीनिंग एस्पेक्ट? टेल मी, कैन वी फिट दिस पोर्शन इन अ प्रॉपर वे? ओके, तो फॉर दैट I have to create some relief hole here. Okay, relief hole is very important. Okay, for example, I am creating a relief hole here. What is the diameter for that? I can take 10 mm, right or wrong? Or more than 10 mm I can take, right? Here and again here and here. See? Okay, extrude, apply. Okay, again. Clear? This is for the fitting purpose, right or wrong? Okay, what is the purpose of this relief hole? For the fitting of this insert, for the proper fitting of this insert. That's why we need this relief hole. Okay, this is nothing but this is the core housing and the cavity housing with the core insert and the cavity insert of the HPDC. Achha, tell me now one more question you have. What is this? What is the material of this? Tell me. Core insert and cavity insert. We are dealing with HPDC. Okay. Tell me. What is the material again? No, it will not MS. It will be hard material. It means we have to take H13 or H11 material. H11 material. Okay. So for that we have to use EDM machining.
Without EDM machining we cannot cut this, okay, because this material need a double hardness. This material H11 or H13 material need double hardness, double HRC, right? It means for example अगर मैं पहले ब्लॉक लेके आता हूँ in a first time I will cut it has a HRC or the hardness around 45 or the 40 HRC, okay, in a first time. Then I can cut a cavity, right? But we have to left some stock into the surface, right? We have to left some stock into the surface, right? For example, I have to I'm lefting some stock, for example 0.2 mm. It means 200 micron in the surface, right? On the surface, okay. It means this 0.2 or the 200 micron we have to cut with the EDM machining, electrode EDM machining, right or wrong? So for the HPTC mold or for machining the core and cavity surface we have to use EDM machining, because its hardness is very high. That's why for the higher hardness, right, we have to use EDM machining, okay, which is known as electrode EDM also, okay, electrode EDM. That's why. Understood? Okay. Achha, what is the material for the housing? Housing. This is nothing but the housing. For that, we cannot use MS here. MS we can take in plastic. For example, if we are designing injection mold, then we can take MS for the housing purpose, right? But if we are dealing with the HPDC, with the mass production, with the large production, then it means we have to use C45, which is C45 material, which is more hardened than MS material, right? But less hardened than H13 or the P20 material, right? So for the housing we can use C45 material, right or no? I hope you understood about this, right? I hope you understood. Okay, this is the core side. Again, this is the core side here, okay, or this is the core side. It means I have to create here, again I have to create here a spacer. Yes. Yes. अगर HPDC के साथ डील कर रहे हो तो आपको H13 और H11 मटेरियल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मेटल को कास्ट कर रहे हैं और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है? We are casting the metal. It means what is the melting temperature for the aluminium or the zinc? Tell me. 350 to 450, right or wrong? 350 to 450 degrees Celsius. Or what is the melting temperature for the PP or plastic? Less than 200, max less than 200 degrees Celsius. Only one material PA has a melting temperature about 240 degrees Celsius, right? अगर PP की बात करूं तो 160 डिग्री सेल्सियस में ये क्या करता है? मेल्ट करता है. PP मेल्ट इन 160 डिग्री सेल्सियस मैक्स, राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पर मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है. इट मीन्स इफ द मेल्टिंग टेम्परेचर इज हायर देन इट मीन्स वी हैव टू टेक हार्ड एंड मटेरियल फॉर द कोर एंड कैविटी. We have to take hardened material for the core and cavity. That's why we have to take H11 or H13 material. Okay, that's why. बाकी P20 भी ले सकते हो, लेकिन P20 बेसिकली डाई मटेरियल है और P20 हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर द इंजेक्शन मोल्डिंग, फॉर द कोर कैविटी, फॉर द इंजेक्शन मोल्डिंग. और P20 भी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द P20 मटेरियल, P20 डील विद द प्लास्टिक. Or P20 has some grade, for example low grade, medium grade and high grade, but depending upon the production we can choose that material. Okay, but if we have a higher production of the plastic component, that we have to go for the high grade, right, of P20. But we are not considering P20. We cannot consider this P20 with this HPDC, right? Understood? Okay, so
basically I'm creating a complete mold base for that. Okay, now you have to remember this is the very simple thing, okay, about the mold base. Okay, see, I'm extruding this portion again. So what will be the length for this mold is smaller, it means we can take depending upon the length of the component, right? Length of the component. Okay, for example, length, let me check what is the length. 1 minute. 1 minute, let me check. No, not 95 is the length. Length is about 49, 50 mm. 50 mm is the length. 50 mm is the length, right? So 50 mm is the length. It means 1 minute. 50 mm. Okay, here again 50 mm. So 50 plus 10 mm will be clearance, plus again 12 mm for the ejector plate and 17 mm for the ejector back plate, right? Plus 5 mm for the rest button. Okay, you have to understood this portion, which is very important. Again, mirror this portion. Okay, I'm creating a mold base, right? Okay, now here I can take top plate. So this is the top plate. Okay, see, this is the top plate. Right, once we complete the mold base, we can start the designing of a runner system, right? Okay, तो बेसिकली क्या होता है कि H13 और H11 मटेरियल जो होता है ना, वो महंगा होता है. H11 and H13 material costing is high, that's why. Okay, we have to use the insert here. Okay, we have to use insert here. Okay, because of the higher costing. 3 mm. Extrude this portion. 5 mm will be the for the rest button, and you can take 22 mm. It means it will be 70 mm, and click OK. Now here, this will be the again region boundary, and this is the 0. It will be about 12 mm, and click OK again, and click here. See, understood? Clear? Okay. Okay, use Control J again. Use Control J again, Control J. We are dealing with the design portion, right? Okay. Here, this will be the ejector grid. This will be the ejector grid. Control J again. This will be the clear. This will be the top plate. See, understood? Okay, here this will be the clamping portion. Clamping portion I can okay, understood about this? Tell me. इतना समझ में आया जितना मैंने अभी तक बताया है? Okay, now we have to design complete flow analysis and the runner portion, right?
So here you do one thing, take a layer, move to layer, okay, and create a layer. Okay, 1 minute, one, and hiding this portion, hiding this portion, this portion, adding this, and this is nothing but the core, right? This is the core, or this is like this. Okay, move to layer, complete elements. This will be, I will move in one layer. Okay, see, completely. Okay, and I am preparing layer 2 and click OK. Now layer setting and hide this portion. Okay, hide this portion. It means we want to show only this portion because we are creating core and cavity, or we are creating runner portion and the overflow portion, right? That's why. Okay. Okay. Now tell me about the calculation for the runner, about the HPDC. Tell me. Remember about that? So what is the ratio of the gate and runner? Remember? Right? 1:8. This will be the ratio. Right or wrong? This will be the ratio. Yeah. Yeah, of course we have taken. You have seen this, right? So this is nothing but this is the plunger diameter. So we have to select that plunger diameter depending upon our short weight, right? For example, our component weight is about 200 gram, right? Or our component weight is 250 gram, or it means we have to add 40%, right or wrong? So what is the 40% here? It can be 35% or 45%, but for the safety purpose or for the factor of safety we have to use 40%, right? Okay, so what is the 40% of 250? 100. 100, right? 100. Okay, add this. So this is the 350 gram, and we need 35 plunger diameter. It means we can fill 430 gram material. 430 gram material. So we can feed this 350 gram material, right? Okay, so we need this plunger diameter, right or wrong? Okay, understood? Okay, now I am taking distance. For example, this is the, how much? 35, right? 35. I am taking this distance. Okay, a minute. See, I am taking this distance. This is the 35. Again, like this. Okay, now for example, in machine specification we find out that this is the 120 mm distance, right? So we have find out that this is the 120 mm distance, right? Now we have to take some thickness also. See, I am taking thickness. This is the 60 mm. What is this? This is the sprue, right? Now take this
Okay, take this portion, now click OK again, and view and layer setting and 22 layer, click here. Subtract from here first of all, and subtract from here also. Okay, so this will be look like this. See here, this is the housing. Okay, now tell me, is it clear? This is nothing but this is the what is this? Okay, here 10 mm, you write with this and click OK. And then you write with this and click OK. See, okay, Control H. See, this is the section view. Now here, see the section view. Understood? Now see what is the wall thickness. Again, 1 minute. Okay, now what is the wall thickness of the component? A nominal wall thickness, I can take this. So let see from this point to this point. What is the nominal wall thickness? About 3 mm. It is about 3.35 mm, but maximum wall thickness you can find out that it is around 3.5 or 3 to 3.5, right? Okay, so I can take 3 mm, right or wrong? I can take 3 mm as the wall thickness, right? It means what will be the thickness of the gate? Tell me, boy, it is easy. What will be the thickness of the gate? What is the thickness of the gate? Tell me. Okay, it will be 1 mm. As I told you, 3 mm is the wall thickness. 3 divided by 3, it means 1 mm, right? Yeah. So स्लाइड हुआ मैं ओके चलो चलो सॉरी एक्सेप्टेड इट्स ओके चलिए ठीक है तो 65 ओके 65 हियर आई एम टेकिंग 65 बेसिकली आई एम प्रिपेयरिंग द रनर राइट तो नाउ सी हियर आई एम प्रिपेयरिंग अगेन दिस पोर्शन सी हियर ओके दिस इज द 65 तो यहाँ पर मैं इसको 65 पे रहने देता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट और दिस इज again this is the nothing but this is I want thickness also, right? So see here
this is the diameter. What is the diameter? I am taking here. Okay, so 2 mm or 3 mm I can take. Okay, I am taking 96 like this, 96. Okay, and offset. Okay, how much offset we can take for the gate runner? Tell me. 5 mm I can take, right? 5 mm, and this diameter मैं 4 mm का डिस्टेंस लूंगा फ्रॉम देयर, राइट? तो ये दिस इज द 96 mm, और इसको मैं 100 कर लेता हूँ, 100 mm ये हो गया, राइट? और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ. दिस विल बी द 68 mm फ्रॉम दिस, राइट? और इसको कितना मैं ऑफसेट लेने वाला हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट? 4 mm, राइट? तो इट विल बी 8 mm. तो टी इसको ट्रिम कर देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं एंड डिलीट दिस पोर्शन. ओके, राइट? इसको हटा देते भाई, यहाँ से ये हो गया, राइट? एंड यहाँ से इसको भी मैं हटा देता हूँ जरा, यहाँ से एक कर्व ले लेता हूँ लाइक दिस, और इसका कुछ एंगल दे देते हैं. ओके, 45 एंड क्लिक ओके. टी अगेन, ठीक है. ये जो नॉमिनल हम लोग डायमीटर बना रहे हैं, इज इट इनफ फॉर द सिंगल कैविटी? हम लोग सिंगल कैविटी के लिए इतना हमारा पोर्शन इनफ होता है. यहाँ से मैं इसको टी अगेन ये रहा, राइट? इसको चाहो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ट्रिम करूँगा, राइट? ट्रिम करो यहाँ से भाई, यहाँ से भी इसको ट्रिम करो एंड क्लिक ओके. दिस इज नथिंग बट दिस इज द रनर पोर्शन एंड क्लिक ओके. नाउ सी हियर, राइट? दिस इज द रनर पोर्शन, ठीक है? तो यू कैन एक्सट्रूड दिस पोर्शन. आई हैव टोल्ड यू अबाउट द थिकनेस विच इज द 8. आई हैव टोल्ड यू अबाउट द थिकनेस विच इज द 8, राइट? नाउ सी, दिस इज द connected curve I can take. So region boundary, this is the region boundary, this is the again region boundary, and this is the region boundary. 1 minute again, फिर से इसको हटा देते हैं. हाँ, ये रहा region boundary. यहाँ से मैंने ले लिया इसको none. Okay, and 8 mm, as I told you 8 mm will be the thickness. See, 8 mm, right? With some draft also. ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मैं, ठीक है? अब इसके अंदर ड्राफ्ट देना जरूरी है. कितना रहेगा ड्राफ्ट? व्हाट विल बी द ड्राफ्ट? भाई ड्राफ्ट देना जरूरी है ना, रनर है बेसिकली ये, ठीक है? ये क्या है? ये रनर है. तो यहाँ पर मुझे फेस पे, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है? 1 मिनट. तो यहाँ पर इसको ड्राफ्ट देते हैं 3 mm. पॉसिबल है क्या? चलो देखते हैं. अगेन ये देखो, 1 मिनट, कोई दूसरा फेस सेलेक्ट हो गया, फिर से देखते हैं. ड्राफ्ट, ठीक है? समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ भाई. दिस इज द स्टेशनरी फेस एंड दिस विल बी द like this, or 5 mm I can take, 5 degree I can take, 1 2 again, and this will be like this. Okay, okay. See, using edge blend. Okay, 1.5 mm right now I am taking. Edge blend and edge blend. Okay, and click OK.
See, understood about this? Okay, understood about this? Okay, now see, here this portion, okay, I'm not creating gate right now, okay, I'm not creating gate right now, gate will be like this, okay, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको बता देता हूँ, गेट विल बी लाइक दिस कि भाई एक गेट यहाँ पर आएगा, दिस इज द व्हाट विल बी द थिकनेस फॉर द गेट, टेल मी 1 mm, okay, or here, or you can say that width will be 4 mm, 4 mm will be width, 4 mm will be width, okay, और now यहाँ पर क्या आएगा हमारा overflow like this, okay, overflow I can take, ओके, और ओवरफ्लो में ड्राफ्ट हम लोग कितना देंगे, 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री दे सकते हैं, नहीं 5 डिग्री तक आप दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, ठीक है, उसके अंदर ड्राफ्ट आपको देना पड़ेगा, और किधर आएगा, ये कैविटी साइड में आएगा, ड्राफ्ट किधर आएगा, कैविटी साइड में आएगा, राइट, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक ओवरफ्लो बना देता हूँ, लेकिन आपको उसको उसके हिसाब से ही क्रिएट करना है ना, जैसा वॉल थिकनेस रहेगा वैसा ही आपको इसको क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर एक अभी ओवरफ्लो आपको क्रिएट करके बता देता हूँ, वैसे ही, राइट, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 4 mm का थिकनेस ले लो भाई, इसको मैं बोल देता हूँ कि भाई मैं इसको ले लेता हूँ 36 mm ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक ओवरफ्लो बनाना है तो एक ओवरफ्लो बना सकते हो, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 18 mm, ठीक है, जो कि ज़्यादा डिस्टेंस है लेकिन ले लेते हैं, कोई बात, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ 0 mm डिस्टेंस, राइट, और 9 mm, और व्हाट विल बी द ड्राफ्ट 5 mm, राइट, ओके, एंड क्लिक ओके। ठीक है, ड्राफ्ट विल बी लाइक दिस, और इसके अंदर भी आपको रेडियस देना पड़ेगा, ठीक है, सिंगल कंपोनेंट है भाई, इसलिए आपको इजी दिखेगा, लेकिन जितना कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट रहेगा ना उतना ही ज़्यादा आपको थोड़ा सा रनर डिज़ाइन और सभी चीज़ों को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। क्लियर, सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द ओवरफ्लो विच इज द पार्ट ऑफ, ठीक है, क्लियर है हियर, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या बना रहे हैं, एक एचपीडीसी वाला मोल्ड क्रिएट कर रहे हैं। बाकी देखो रनर, ओवरफ्लो वाला सिस्टम, रनर वाला सिस्टम और ये सभी चीजें जो होती हैं ये थोड़ी सी अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस ऑफसेट इज डिफरेंट, राइट, तो ये सब चीजें अलग होती हैं, तो ये बनाना जरूरी है, ठीक है। गेट आप बनाओगे वो चीज भी है। अब यहाँ पर एक चीज होती है वो होता है डिफ्यूजर। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसको मैं जरा हटा देता हूँ, इसको यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ, और यहाँ पर देखो ये रहेगा इसका पार्ट, ठीक है, मैं इसको यहाँ से हाइड कर दूँ जरा, इसको ये रहा, सी यू कैन सी दैट दिस इज नथिंग बट दिस इज द रनर एंड और ऑफ ओवरफ्लो इंप्रेशन इनटू द कैविटी साइड, राइट, और दिस विल बी स्टक इनटू द कोर साइड, राइट और रॉन्ग, राइट। नाउ here control J, control H, sorry, right, now see here this will be the one more element here like this। यहां पर ये कुछ इस तरह से रहेगा, देखो बताता हूं, ठीक है। ये जो रहेगा ना, यहां पर एक और एलिमेंट आने वाला है, ठीक है, ये रहा एलिमेंट पीछे से आएगा लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है, और ये जो पोर्शन रहेगा ये कुछ इस तरह से इसके अंदर जाके लॉक होगा लाइक दिस, इस तरह से लॉक होगा, राइट। और ये जो रनर रहेगा आपका इस तरह से आएगा, रनर विल बी लाइक दिस और दिस विल बी द बिस्किट, अंडरस्टूड, दिस विल बी द बिस्किट, अंडरस्टूड, ओके। और ये क्या रहेगा हमारा भाई, व्हाट इज दिस, टेल मी, what is this portion, diffuser, ओके, जो कि इसको सेंटर अलाइन करेगा, स्क्रू को
और इसको सेंटर लाइन करेगा और इसको लॉक करने का काम करेगा, इसको लॉक करने का काम करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। फॉर द रेफरेंस पर्पस मैं आपको ये वाला जो डिजाइन है इसको आपको और आगे बढ़ाना है, इसको पूरा कंप्लीट करना है आपको। क्लियर है? ठीक है, मैं अब आपको कंप्लीट डिजाइन बता देता हूं, क्योंकि इसको पूरा डिजाइन करने में मुझे 1.5 घंटा और लग सकता है। राइट और रॉन्ग? ठीक है, चलिए तो इसका मैं कंप्लीट डिजाइन आपको बता देता हूं। सी HPDC मोड, सी हियर यू कैन सी दैट, सी ओके, दिस इज द housing, or this is nothing but this is the, see here, see, okay, this is the impression. Now see here, this is the sprue portion. Okay, now see, this is the diffuser here, see, now see, this portion will be the diffuser, right? This portion will be the diffuser, right? Okay, and this is the insert, this portion will be the insert, right? And same ejector pin like this, and same ejector pin like this. This is nothing but this is the ejector pin, see, which is connected with the ejector grid. See, control H again. Now see, acha, what is the purpose of this section? Tell me. For the locking of sleeve, for the locking of sleeve, from where material will come into the sprue, right? Yeah, okay, just like a locating thing. Very good. चलो, समझ में आया इतना? ठीक है, okay, this is nothing but this is the complete HPDC for the single cavity, okay. For the reference purpose I will give you this mold, or you have to complete this mold, okay, you have to complete this mold design, you can say that, right? Okay, this is, yes, हाँ, श्योर ऑफ कोर्स, मैं स्टेप में प्रोवाइड करा देता हूँ आपको। ओके ओके, चलो, समझ में आया सभी को? ठीक है, वी विल कवर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे भाई सैटरडे के दिन में भी, राइट? सैटरडे के दिन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे ड्राफ्टिंग, इन विच वी विल कवर ड्राफ्टिंग एंड द बिल ऑफ मटेरियल बॉम्ब, ओके, एंड बिल ऑफ मटेरियल। और आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग सीखेंगे अनस्क्रूइंग मोल्ड, संडे के दिन में भी अनस्क्रूइंग मोल्ड देखेंगे। उसके बाद रहेगा हमारा हॉट रनर मोल्ड, ओके, ठीक है। जो नेक्स्ट सैटरडे को लेक्चर रहेगा वो रहेगा ड्राफ्टिंग के बारे में, मोल्ड की ड्राफ्टिंग हम लोग कैसे करते हैं और बिल ऑफ मटेरियल को हम लोग कैसे बनाते हैं। क्लियर है? हाँ, सैटरडे और संडे है ना। हाँ, ये ड्राफ्टिंग में JD&T रहेगा ना, है ना। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, चलिए, ओके, गुड डे, गुड नाइट।